श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अथ अथर्ववेदस्य विश्वकर्मा सूक्तम्। ओम ये भक्षयन्तो नवसून्यानुधुर्या नग्नयो अन्वन्त्यप्यन्तधृष्ण्याः या तेषामभयादुरिष्टिसृष्टिनुस्तां प्रणवद विश्वकर्मा यज्ञवातिर्मृषा येन साहुर्निर्भक्तं प्रजाम् अनुदप्यमानम् पृथिव्यां स्तोकानपयारराधसं नष्टे विसृजतु विश्वकर्मा अदान्यान् सोमपान्मन्यमानो यज्ञस्य विद्वान् सामयेन धीराः यदेनश्च कृवान् बद्ध एष तं विश्वकर्मन् प्रमुञ्चा स्वस्तये घोरार्षायो नमो अस्त्वेभ्यश्चक्षुर्यदेशां मनासस्य सत्यं बृहस्पतये महिषद्युमन्नमो विश्वकर्मन्नमस्ते पाश्या अस्मान् यज्ञस्य चक्षुप्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि इमये यज्ञं वितातं विश्वकर्मणा देवायन्तु सुमनस्य माना। अथ अथर्ववेदस्य प्रतिवेदनसूक्तम्। ओम आनो अग्ने सुमतिं संभरो गामे दिमा कुमारी सह नो भगेन दुष्टा वरे सुमने सुबलगुरो संपत्त्या सौभागमस्तस्यै सोमा जुष्टं ब्रह्मा जुष्टमर्यम्ना संभृतं भगम् धातुर्देवस्य सत्येन कृणमे पतिवेदानम् यमग्नेनारीपतिं विदेष्ट सोमो हि राजा शुभगा कृणोति शुभाना पुत्रान् महिषी भवादिगत्वावतिं शुभगाभिराजतो यथा खरो माघवंश्चारुरेश प्रियो मृगाणां सुसुता बभूव एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी सम्प्रिया पत्या विराधयन्ति भगस्य नाममारोह पूर्णामनुपदस्वती तयो पप्रतारयो वरः प्रतिकाम्याः आकन्दय धनपते वरमामानसङ्कृणो सर्वं प्रदक्षिणं कृणुयो वरः प्रतिकाम्याः इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमोक्षो अथो भगाः एते पदिभ्यस्त्वामादुःपदि कामाय वेत्तावे आते एनयदु सविता नायदुपतिर्यः पदि काम्याः तमस्यै धेह्योषधे। इसे सुनने मात्र से परिवार का कष्ट दूर हो जाता है, पति पत्नी में अच्छा कलह नहीं होता है, अच्छा पड़ता है। धन्यवाद।